Hello and welcome to Female Cricket Live. The first ODI between India and New Zealand is done and dusted, with New Zealand winning the match by 62 runs. New Zealand take a 1-0 lead in the 5-match ODI series, and the second ODI will be played on February 15, that is tomorrow, from 3:30 a.m. IST onwards. All right, so what happened in the first ODI? India won the toss and chose to field first. So batting first, New Zealand posted a challenging score of 275 and they were bowled out in 48.1 overs. Susie Bates scored a wonderful 106 after being dropped on 14 by Rajeshwari Gaikwad standing at point of Pooja Vastrakar's bowling. So Susie Bates definitely made the Indians pay a heavy price for that dropped catch as she went on to score a superb century, which was also her 11th in her ODI career. Also, Amy Satterthwaite, she scored a wonderful half century, which contributed to New Zealand's big score of 275. For India, the wicket takers were Jhulan Goswami, Rajeshwari Gaikwad, Deepti Sharma, and Pooja Vastrakar, who picked up 2 wickets apiece, and Poonam Yadav chipped in with 1 wicket. Then in reply, India could manage 213 runs thanks to Captain Mithali Raj's half century and Yastika Bhatia's 41, which was very useful for India's run chase. However, the rest of the Indian batters could not contribute much as the Indians fell short of 62 runs in the end. For New Zealand, Jess Kerr was the recurrent chief as she picked up 4 wickets and cleaned up India's batting in style. So now, what will happen in the second ODI? Will India be able to bounce back, or will New Zealand again emerge victorious? So to talk more about the first ODI and of course the second ODI, I have with me two former India cricketers in Sonia Dabir and Preeti Dimri. I welcome both of you to Female Cricket Live. Thank you. Thank you very much. ऑलराइट सो सोनिया मैम आपके पहले थॉट्स क्या है फर्स्ट ओडीआई के बारे में इंडिया और न्यूजीलैंड कैसा था उनका परफॉर्मेंस Well, actually, both of them played really well. न्यूजीलैंड के सूजी बेट्स ने जिस तरह से अपने ड्रॉप कैच को यूज किया एक 100 बनाने के लिए, सो दैट वाज you know that's the way these top players perform. They just are not into the game. They are into the game when even if the catch is dropped, and definitely I feel that India also came back very strongly in bowling when New Zealand were going great guns. So there are few positives in the game, definitely from Indian point of view. And New Zealand bowling, I felt, was just bang on. They were not trying much. They were just bowling stump to stump, and which made it a bit difficult for our batters to, just rotate those strike later on when Mithali and especially when Mithali and Yastika departed. Absolutely. So very good all-round performance from the New Zealand team, we can say, as they went on to win the first ODI by 62 runs. सो प्रीति जैसे कि हमने बात की अभी कुछ समय पहले कि राजेश्वरी गायकवाड़ जो पॉइंट पे थे उन्होंने हम्म सुजी बेट्स को ड्रॉप किया 14 रन्स पे पूजा हम्म वस्त्रकार बॉलिंग कर रहे थे उसके हम्म बाद सुजी बेट्स ने 92 रन्स और बनाए और हम्म फाइनली 106 रन्स बनाए जो कि मैच विनिंग पारी थी तो आपके ख्याल में फील्डिंग कितनी इम्पोर्टेंट है और न्यूजीलैंड कंडीशंस में फील्डिंग करना डिफिकल्ट होता है क्या देखिए, मेरा ये मानना है कि न्यूज़ीलैंड में अभी 17 डिग्री के आसपास में कुछ टेम्परेचर है। तो मतलब बहुत कोल्ड नहीं है। अगर बहुत ठंडी होती है तो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हम बोल सकते हैं, ठीक है? एंड सेकंड थिंग फील्डिंग तो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर बॉलर अच्छा डिलीवरी भी डालते हैं या बैट भी डालते हैं, तो फील्डर का काम होता है उसको अच्छे से बुरे में कन्वर्ट करना और बुरे से अच्छे में कन्वर्ट करना। तो फील्डर का तो बहुत बड़ा रोल होता है बिकॉज़ आई हैव बीन लेफ्ट आर्म स्पिनर इन इंडिया टीम तो ऑफ कोर्स आई कैन अंडरस्टैंड कि हाँ फील्डर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक विकेट अगर छूट जाता है ना तो फिर ठीक है बॉलर इतना होपलेस नहीं होता है पर दूसरी टीम को बहुत अच्छा चांस मिल जाता है आगे जाने का हम लोगों से इसलिए सही बात है जैसे कि क्रिकेट में हमेशा कहते हैं कि कैचेस विन मैचेस या तो वो जो ड्रॉप कैच था दैट डेफिनेटली लेड टू इंडियाज लॉस इन द फर्स्ट ओडीआई ऑलराइट सो सोनिया मैम एमी सेटरथवेट और सुजी बेट्स ये दोनों ने बहुत बढ़िया इनिंग्स खेले बट इंडियन बॉलर्स बाद में जैसे कि लास्ट 15 ओवर्स में अगर हम देखें तो दे पुल्ड थिंग्स बैक जैसे कि 8 विकेट गए एंड ओनली 71 रन्स वर स्कोर्ड
तो आपको लगता है कि इंडिया ने कुछ स्टार्टिंग में ट्रिक मिस करी न्यू बॉल के साथ? Uh, I won't say they missed out on trick, but yes, as you said, as rightly said by Preeti, that the fielding part is very important when you have bowlers like Julan or Puja or anyone for that matter. I can understand dropping catches or misfield is a part of the game, but yeah, they will definitely. I'm sure they'll be working more on that fielding part, and I don't think they missed a trick. Susie Bates and Ami Chadrawat both are a very good batters, so. Hmm. The positive thing in that one day was the bowlers, the way they came back after the 35 overs. You know, Hmm. when you have such a two good partnerships, it was Yeah. very good thing. The credit should definitely be given to bowlers that they just gave 71 odd runs in 15 overs, last 15 overs, and took those 7 to 8 wickets. एब्सोल्युटली। तो प्रीति, हम बॉलिंग की बात कर ही रहे हैं। आप खुद एक हम्म। बढ़िया लेफ्ट आर्म स्पिनर थे इंडिया के लिए। हाँ जी। आपको क्या लगता है कि स्पिनर्स का क्या रोल होगा न्यूजीलैंड कंडीशंस में? स्पिनर्स का रोल तो मुझे लगता है स्पिनर्स तो ऐसे बॉलर हैं जो कहीं भी चलते हैं। ठीक है, बहुत मतलब बॉल को स्पिन कराना तो एक अलग आर्ट है, बट आपका लाइन लेंथ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एज़ अ बॉलर, एज़ अ पेसर, एज़ अ स्पिनर। तो कंडीशंस हाँ, पेसर्स के लिए थोड़ा अप्लाई करते हैं, मतलब वो थोड़ा प्रॉब्लम होता है उन लोगों को स्विंग कराने में अगर विंडी है। स्पिनर्स को मुझे लगता है कि कंट्रोल इतना होना चाहिए बिकॉज़ स्पिनर्स इतने फास्ट नहीं होते हैं, सो दे शुड कंट्रोल। और आपने क्या बोला था? सॉरी, फिर से पूछिए, आई मिस्ड आउट। कि मतलब स्पिनर्स का कुछ एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए क्या? क्योंकि हम देखें तो न्यूजीलैंड स्ट्रैटेजी, के राइट। ग्राउंड्स छोटे होते हैं वैसे, तो हुँ, स्पिनर्स तो हुँ, हुँ। इज़िली मार सकते हैं 4 या 6 के लिए। देखिए, स्ट्रैटेजी का क्या रहता है कि आप एक तो उनको हाथ खुलने का मौका ना दें, है ना? अगर ऑफ स्पिनर है तो आप उसको मिडल और लेग की लाइन तो बिल्कुल भी ना डालें। आपको ऑफ और मिडल पे डालना है या थोड़ा आउटसाइड ऑफ द ऑफ और ऑफ की लाइन में। और उनको अगर आप जितना, एक तो उन लोगों की हाइट अच्छी रहती है, बिल्डअप अच्छा है उन लोगों का। तो कैसा है कि और ग्राउंड भी छोटे हैं, तो बाहर मतलब बॉल पे छक्के मारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाती फिर। आप उनको जितना रूम देंगे एज़ अ स्पिनर या छोटा बॉल देंगे, अगर आपको ऐसा है कि नहीं ऊपर ना हो जाए, तो छोटा देंगे, तो छोटा डालिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, फील्डर आपका होना चाहिए, है ना? तो स्पिनर्स का यही रोल है कि आपको मेंटेन करना है, आपको रन रेट देखना है। जैसे एक बैट्समैन को बोला जाता है कि आप रन रेट देखिए, तो ऐसे ही एक बॉलर का काम होता है कि आपको रन रेट देखना है कि आपको 1 ओवर में मिनिमम इतने रन्स ही देना है। अगर आप ज़्यादा देंगे तो दूसरे बॉलर पे बहुत प्रेशर हो जाता है, भले वो स्पिनर हो, चाहे वो पेसर हो। तो ऑफ कोर्स। ऑलराइट। सो लेट अस होप कि अभी जो प्रीति बात कर रहे हैं, वो हमारे इंडियन बॉलर्स, स्पेशली स्पिनर्स, ध्यान में रखें और मे बी थोड़ा और कुछ डिसिप्लिन्ड बॉलिंग करें गोइंग इनटू द सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड ऑफ कोर्स इनटू द वर्ल्ड कप, जो न्यूजीलैंड में ही होने वाला है। ऑलराइट। सो सोनिया मैम, इफ वी टॉक अबाउट नाउ इंडियाज बैटिंग, again a surprise opening combination in Shefali Verma and S. Meghna. In the T20I, we saw Shefali Verma opening the batting with Yastika Bhatia to have the right hand left hand combination. But again, in the absence of Smriti Mandhana, S. Meghna coming in with Shefali Verma. Were you surprised to see this combination? I think more than surprised, they should have, according to me, they should have continued with Yastika and Shefali itself. When you want a left and right combination, and you have Yastika in place of Smriti, or you can she can open the batting, and she is a left-hander. You want a left-hander, you have a left-hander. It's not about Meghna, nothing against Meghna, but she was making her debut. I think Yastika more experienced than definitely than Meghna, Yeah. could have a bit eased out the opening pair when Meghna came in. And you have, when Yastika is an opening batsman and she had recently opened in T20. So, not surprised as such because Meghna is definitely a very good player as well. But when you have a left-hander, I felt that they should have just kept on with Yastika and Shefali. Absolutely. So it will be interesting to see what happens going into the second ODI because, as far as I know, there is no update on Smriti Mandhana's availability for the second ODI. We don't know whether she is out of the MIQ or she's still in the New Zealand's quarantine facility. All right. प्रीति, जैसे कि हमने देखा कि एस मेघना और शेफाली वर्मा ने ओपनिंग की, बट वो जो एक राइट स्टार्ट है वो दे नहीं पाए। तो ओपनर्स का रोल कितना इम्पोर्टेंट है एक अच्छा स्टार्ट देने में टीम के लिए?
T20 में तो ओपनर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, बिकॉज़ वो उसी फॉर्मेट मतलब उनका एक माइंड सेटअप होता है उसी फॉर्मेट के लिए कि भई हमें मतलब आने वाले 5 ओवरों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा रन बटोरने हैं और अगर नहीं भी निकलते हैं ज़्यादा रन तो आपको स्ट्राइक रोटेट करते रहना है, क्योंकि एक रिस्ट्रिक्शन होता है उस समय फील्डर्स का, है ना? और अगर राइट और लेफ्टी बैट्समैन होते हैं तो ऑफ कोर्स फील्डर और कैप मतलब बॉलर का पूरे टाइम माइंड इतना ऑक्यूपाई होता है कि वो ज़्यादा कुछ मतलब एक चीज़ पे स्टिक नहीं नहीं रह सकते। दे हैव टू कीप ट्राइंग और जब हम ज़्यादा ट्राई करते हैं किसी में भी तो हमसे गलतियाँ ज़्यादा होती हैं। तो लेफ्ट हैंड इसका तो इम्पोर्टेंट है और ओपनर्स का बहुत इम्पोर्टेंस इसलिए भी माना जाता है, अगर एक गुड स्टार्ट मिलता है तो बाद के जो अपकमिंग बैट्समैन होते हैं उन लोगों के लिए थोड़ा ईज़ आउट हो जाता है। मेंटली थोड़ा-सा रिलीज़ हो जाते हैं। Absolutely, absolutely. So it is important that the openers provide the perfect start whenever you're batting first or second. In either case, it is important for the openers to fire. All right. So Sonia ma'am, we have been talking about Mithali Raj's batting position for quite a few months now, but again she came in at number four. Yastika Bhatia coming in at number three. So do you think that is going to be the way forward for Mithali Raj? Uh, I would love to see Mithali coming at number three, definitely. But as she had also said in her previous, what you can say, interviews or press conferences, that she's the what the team requires, she will be doing that. So it looks like the team needs Mithali to bat at number four. But I personally would like to see her at number three because that's her position, and as I said before as well, because when she comes in at number three, the rest of the batters can revolve around her and Smriti, and for that matter, even revolve around Herman as well. So these three coming alternate, it will be a good thing for other batters who will be coming in to play with them. Absolutely. So it will be interesting again to see if Mithali Raj promotes herself to number three position in the rest of the four ODIs, or India goes ahead with Yastika Bhatia at number three. ऑल राइट सो प्रीति जैसे कि हम स्मृति मंदाना की भी बात कर रहे थे तो Hmm. जो स्मृति मंदाना आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 थे तो इंडिया ने कितना मिस किया स्मृति मंदाना को T20I में भी और फर्स्ट वनडे में भी मिस तो किया होगा बिकॉज़ एक सेट प्लेयर जो पहले से खेल रहा होता है उसकी उसका एक मतलब उसकी प्रेज़ेंस टीम में ना बहुत अलग रहती है। और जब कोई न्यू कमर आता है तो उसकी प्रेज़ेंस पे थोड़ा सबको डाउट रहता है बिकॉज़ इट इज़ बेसिक नेचर ऑफ ह्यूमन्स। तो ऑफ कोर्स मिस किया होगा, प्लेयर्स ने मिस किया होगा और सबसे ज़्यादा स्मृति ने ही मिस किया होगा ग्राउंड को, क्योंकि जब हम ऐसे सेकंड चांसेस में हम बीमार हो गए या कुछ होता है तो हम हमारे लिए ही बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और अब देखिए, अभी देखिए अगर वो मैच खेलती तो फिर अभी देखेंगे कि कितना धोएँगी फिर ये अभी न्यूज़ीलैंड को। Absolutely. So let us hope that she is available for the second ODI. But as of now, to the best of our knowledge, there is no update on Smriti Mandana's availability. All right. So Sonia, ma'am, moving to one of the most important batters in the Indian lineup, and of course the vice captain of our ODI team, Harmanpreet Kaur. She was wonderful in the WBBL, winning the Player of the Series. So I'm sure that even you must have had the confidence that Harmanpreet Kaur is going to fire in the New Zealand series and of course in the World Cup. But not the right start for Harmanpreet in the New Zealand tour. So what are your thoughts on her batting and of course her bowling as well? Uh, I think Herman is kind of a player. Everyone knows that she takes time to settle down. She takes her own sweet time to get into that zone to score runs. And but whatever I saw in the first ODI, I thought in that process of taking that time, she can play her natural game when there are those balls which she can hit when she is actually in the zone of for scoring the run. So yeah, taking your time, Harman does that, everyone knows, but I think she can play a more natural and her own game in the second ODI, right from the start. I think she can express herself more uh, from the start, initially as well. So just maybe adding to this question, Sonia ma'am, what do you think exactly should Harmanpreet Kaur do? Because we all know that she's an attacking batter. She likes to hit the ball in the air, but now she's struggling to find the middle of the bat. So do you think she should concentrate more on rotating the strike than the big shots?
No, I don't think she's troubling to hit middle of the ball. Definitely, she was looking good the other day as well. But in I felt that when she was, I think in her own mind also she knows that when she spends more time on the wicket, she gets in the zone of getting into the groove of scoring runs and all. But in that process, I think she missed out on those balls. She otherwise would have definitely hit for a four at least. She can step out and she can get on the bowlers initially also to just, or instead of to wait for that particular taking that time. But when you're getting the balls to hit, I think she can go and hit those balls freely. Yeah, everyone knows, and even she knows, she had a brilliant WBBL. So she just can continue that form the way she had batted in those T20s as well. Because in the first ODI, I think when Herman came, it was almost the T20, the 20 last 20 overs remaining, or 20-25 overs. So in that situation, I felt she could have just gone and expressed herself. Yes, let us all hope that Harmanpreet Kaur is back in form, because we all can never forget that superb 171 that she hit against Australia in the semi-final of 2017 World Cup. So we want her back in form, and let us hope that she is able to do that soon. All right. So प्रीति, हम अभी इंडियन बॉलर्स की बात करेंगे जो अच्छा बैटिंग भी कर लेते हैं, जैसे कि पूजा वस्त्रकार है, दीप्ति शर्मा है, स्नेह राणा है। तो आपके ख्याल से ये जो बॉलर्स बैट के साथ कंट्रीब्यूट करते हैं, वो कितना इम्पोर्टेंट होता है और बॉलर्स को कितना फोकस करना चाहिए बैटिंग के ऊपर भी? देखिए, जब इनको डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो ऑफ कोर्स इनका बैटिंग भी 100% है और बॉलिंग भी 100% है। तो इट बिकम्स टू 100% इन लोगों का परफॉर्मेंस करना ही करना है। ये ना तो ये बैटिंग में फेल होने की मतलब कोई उम्मीद होनी चाहिए और ना ही बॉलिंग में। क्योंकि अगर हम इनको एज़ अ ऑलराउंडर खिलाते हैं, तो हम एक बॉलर को मिस करते हैं वहाँ पर। तो अगर हमें किसी का प्लेस मिलता है तो समझ लो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी दुगनी हो जाती है। क्योंकि सोनिया और मैं जब खेलते थे, तो सोनिया वाज़ एन ऑलराउंडर प्लेयर, है ना? तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होता था। तो ये है कि ऐसा नहीं है कि हाँ, मतलब अब आप बैटिंग में हो गया और बॉलिंग में नहीं हुआ। उन वो तो दे कैन नॉट इवन अफोर्ड, ऐसा है। क्योंकि आप किसी की जगह लेके खेल रहे हो, सबसे बड़ी बात हो जाती है ना? तो और ठीक है, मतलब अच्छी बात है, अगर आपको 2 रोल मिले हैं, तो आपको फुलफिल तो करना ही चाहिए। Right. So yes, Indian bowlers are really doing well with the bat, like Pooja Vastrakar, who has the ability to hit those big shots and, of course, keep the scoreboard ticking. Sonia ma'am, now we are going into the second ODI. It is just a few hours away. It will start at 3:30 a.m. Indian Standard Time. So just a few hours away from the second ODI. So do you expect any changes in the playing level? Yeah, I think I'm hoping that Smriti comes back for sure, and I would definitely like to play Sneha Rana in the playing 11, because she is a player. I think you can have her in the team, and she can go and whack when you need that acceleration. At the same time, she can be that person who will just keep on rotating strike, and she'll be there on the wicket. So definitely, I would like to see Sneha Rana, and of course with her bowling, that consistency with her bowling in line and length, regarding line and length, it's very important in these especially in these conditions as a spinner. So I would like to see Steer and I'm playing. Okay, so Sonia ma'am, you want to see, of course, Smriti Mandhana and Sneha Rana playing. Smriti Mandhana, I can understand in place of S. Meghna, but Sneha Rana, who would you be dropping for Sneha Rana? uh, it's a bit tough call, but definitely, but I would get in Sneera in place of either Poonam or Rajeshwari. Okay, that is interesting, because you will be dropping a specialized bowler for a bowling all rounder. All right, Yeah, but so that's why I said that Sneerana I want, because of her consistency in that bowling in that those line and lengths which she bowls, and you have a deep depth in batting when Sneerana comes in. absolutely, absolutely. All right, प्रीति, आपके क्या ख्याल है, कौन होगा प्लेइंग 11 में सेकंड ओडीआई में? सेकंड ओडीआई का तो टीम मतलब मुझे लगता है कि
राजेश्वरी आनी चाहिए एज अ स्पिनर, और अपना स्मृति मंदाना आनी चाहिए, और हम्म। बाकी तो सब लोग थे ही। बैटिंग हमें इसलिए डीप चाहिए रहती है क्योंकि अगर आपको अच्छा स्कोर बोर्ड चाहिए तो आपको बैट्समैन की तो ज़रूरत रहेगी। राइट। हाँ, तो क्योंकि स्मृति मंदाना स्कोर करती आ रही हैं, और अभी देखिए अभी क्या डिसीजन होगा। और रहा स्नेहा राणा, तो स्नेहा राणा ऑफ कोर्स वो भी मतलब ऐसी बैट्समैन है कि जब आपको रन चाहिए होंगे वो अटैक करके भी अच्छा खेलती है। हम्म। हम्म। मतलब वो एज अ फील्डर भी वो अच्छी है, थोड़ा बहुत बॉल भी डाल लेती है आई हम्म। थिंक। और एज अ मतलब फील्डर भी एज एज अ बैट्समैन। करेक्ट, तो करेक्ट। डीप अगर आपका बैटिंग लेंथ है, लाइन लेंथ है, तो आपके लिए बहुत हेल्प रहता है टीम के लिए। करेक्ट। So yes, both of them are agreeing that Sneha Rana can be a part of the playing 11 going into the second ODI. Let us see what happens because we are just few hours away from the start of the second ODI. All right, so we are getting many questions from the viewers. Maybe we can take a few of them. Okay, so Mohit Bararia is asking, would you like to see Yastika Bhatia take the gloves and not Richa Ghosh? I think probably he's asking because Richa Ghosh missed one catch in the first ODI. Maybe that could be the reason. So, Sonia ma'am, would you like to take this up? Yeah, no, I don't think there is any need for Yashtika to come in and take up the gloves when Richa Ghosh is definitely doing a good job. If one catch is dropped, you just cannot replace that player suddenly. She's doing well, she's batting well, she is keeping well as well. These catches or like these ups and downs are part of the game. So I don't think Richa Ghosh should be, Yashtika should be doing the keeping work when you have Richa Ghosh, because then you will be making Richa Ghosh and Tanya Bhatia both the specialized keepers sit out and play someone else. So there's no need as of now, at least. Okay, okay. I hope Mohit Sonia ma'am was able to answer your question. Okay, next question is from Siddesh Vaikar. Since we have faced multiple defeats, please tell us the role of sports psychologist in encouraging players. How impactful will it be? So प्रीति, ये फर्स्ट टाइम हुआ है इंडिया के साथ कि एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मुग्धा बावरे शी इज ट्रैवलिंग विद द इंडियन टीम। जैसे कि Hmm. हम देख सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों में मेंटल हेल्थ को लेकर काफी चर्चा होती है। और जैसे कि अभी एक ऑस्ट्रेलिया की भी प्लेयर है सोफी मोलिन्यू जिन्होंने वर्ल्ड सॉरी हैना डार्लिंगटन जिन्होंने वर्ल्ड कप से अपना नाम निकाल दिया है बिकॉज ऑफ मेंटल हेल्थ रीजंस। तो आपको क्या लगता है ये स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट का रोल कितना इम्पोर्टेंट है? स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज एक प्लेयर पे एक तो जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा रहती हैं, है ना? आपके परफॉर्मेंस की, टीम की, खुद का परफॉर्मेंस है, आपको सबको साथ में लेके चलना रहता है। और मतलब कौन सा ऐसा मोड़ आता है कि आप थोड़ा सा डिस्टर्ब फील करते हैं, या फिर अपने परफॉर्मेंस को लेके आप अगर अच्छा आप जैसा चाहते हैं अपनी एक्सपेक्टेशंस के आप परफॉर्मेंस नहीं करते हैं, तो मतलब आपके लिए कोई गाइडेंस चाहिए उस समय। ठीक है, आपके सीनियर से आप पूछते हैं, बट कहते हैं ना कि डॉक्टर डॉक्टर ही रहता है, और कंपाउंडर कंपाउंडर ही रहता है। देयर इज अ डिफरेंस। तो ऐसा है कि मुझे मुझे लगता है कि अगर ये स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, अच्छा इन्वेस्टमेंट है। Absolutely. Sonia ma'am, your comments on having a sports psychologist with the team? And Uh, sometimes ऐसा होता है कि we need to talk to someone, but there are other players. We know that they are our colleagues, they are players, but they are also in their own set of things. And that point of time, we need someone who can sit and just understand or just listen to us. That also helps at that point of time, because too many things are going into the mind, going into the New Zealand series, and then you have that World Cup with this bio bubble, 2 months of travel, and all those things. This sports psychologist definitely will be a big help to the players. I'm sure about that. Great, great. Let us hope our Indian team players benefit from the services of Dr. Mukta. Okay, so Mohit Bararia has one more question. How can we get past 250 runs in ODIs? Because we have seen that India has struggled because of the big dot ball percentage that we have. तो प्रीति आपको क्या लगता है कि कैसे हम 250 रन स्कोर कर सकते हैं 50 ओवर में? 50 ओवर में 250 रन, मेरा ये मानना है कि बैट्समैन को सिंगल एक्सचेंज करना होगा। अगर आपके बड़े शॉट्स भी नहीं लगते हैं, तो सिंगल ही ऐसा है जो आपको अच्छे स्कोर बोर्ड पर लेके जा सकता है।
अभी जैसे कुछ टाइम पहले मैं मेंस आईपीएल का देख रही थी, तो उसमें बड़े शॉट जा रहे थे या नहीं जा रहे थे, बट वो लोग सिंगल्स पे इतना फोकस था उन लोगों का। तो ये बिकॉज़ सिंगल्स आपके पार्टनरशिप बिल्डअप होता है, आपका भी कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है और दूसरे बैट्समैन का भी अच्छा रहता है। और स्ट्राइक जब जब रोटेट होती है तो सबका मतलब एक टीम का स्कोर बोर्ड भी आगे जाता है, और आपको भी एक एक कॉन्फिडेंस आता रहता है कि हाँ भाई बैट पे लग रही है, मिडल ऑफ द बैट से बॉल जा रही है। सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट सिंगल। Absolutely. So Sonia ma'am, what do you think that can India go past 250 runs in ODIs on a frequent basis? Yeah, definitely. We need more partnerships like the one with Yastika and Mithali. I'm sure when Smriti will be there, these they will have a good start. Not that these two didn't have, but that what you can say, the effect with which Smriti bats, or that confidence, the way she bats, and she is an attacking player. At the same time, she is a batter who can continuously keep on rotating the strike as well. And I'm sure I'm waiting for Herman to get back, so we will definitely get past those 250 runs. Because when you have Smriti, who's got us a good start, Yastika, Mitali and Harman, they will be in a good position to just go and express themselves, you know right. Other than getting in the zone from 14 for 2 and then rotating the strike, settling down. If you are, let's say 50, 60 runs on the board and one wicket is there, then I'm sure the other batsman can go and express more freely. Absolutely. As both Sonia ma'am and Preeti have pointed out that India do have the ability to go past 250 runs in ODIs on a regular basis. All right. So we have another question from Akash Yadav. We need one more fast bowler such as Renuka Singh Thakur or Meghna Singh. Uh, Sonia ma'am, your thoughts on this? Are Yeah, we we have. satisfied with Pooja Vastrakar and Jhulan Goswami, or we need one more? Actually, it will be a good thing to see three fast bowlers playing. It will be very interesting to see either Meghna and Renuka Singh. But I think they are also with Smriti in that quarantine thing. So I'm hoping that they also come out early, because those two bowlers, Meghna and Renuka, have done extremely well in the Australia series. So looking forward to have three pacers definitely in one of the ODIs. Yeah, and Sonia ma'am, I do remember that in one of our chats, you had said that maybe India going ahead with four bowlers, four Definitely. fast bowlers in New Definitely, I would Zealand love to see conditions. that. All right, so let us hope that Meghna and Renuka are both back with the Indian team from the quarantine. All right, okay. So, yes, so it was again wonderful to have two former India cricketers with us discussing about the first ODI and, of course, about the upcoming second ODI that is going to be played between India and New Zealand tomorrow, that is February 15th. And yes, the match will start at 3:30 a.m. IST, and you can catch all the live action on Amazon Prime. So those fans who are back in India, please sleep early tonight and wake up at 3:30 to catch all the live action on Amazon Prime. All right. So thank you once again to Sonia ma'am and Preeti for talking to us, and thank you to all the fans and viewers for watching. Okay. Thank you. Thank you so much. थैंक यू Great. टू, टेक केयर, Thank you. बाय। Thank Bye. you, Zoe.